So, guys, a very warm welcome and good evening to everyone present. My name is Sourabh Joneja. I am an educator and also a former banker. So, as you can see, we are preparing for the upcoming IBPS SO mains examinations for the marketing officer's job. And also, I will be helping you out in case you're preparing for the SBI SO job, right? So, in this session, we're going to take up some very important abbreviation with the perspective of marketing awareness. So in this session number 5, we will be discussing certain abbreviations. So I've taken a bunch of some 15 abbreviations that I'm going to discuss in this session. And these 15 abbreviations is basically a compilation of some of the most frequently asked digital marketing abbreviations and general marketing awareness abbreviations, right? So this will be session number 5. We've already done 4 sessions on marketing awareness that you can check out. The playlist for all the marketing officer mains examination preparation videos is mentioned in the description below, right? So we will be taking up some important marketing abbreviations first. I'm going to show you the abbreviations. I'm also going to explain you the meaning of those abbreviations and their relevance in the marketing scenario, right? Give me a yes in case you can hear me and I am visible as well, because I am not seeing any comments on the chat window as of right now. So if you can somehow give me a response as to if you can hear me and see me properly, I will refresh the chat window meanwhile and should be able to revert to your comments as well. Okay, that's it. So hi guys, good evening, India Mart. Hello Ashwin. Hello Economics World. Good evening, Rakesh Bajpai, Sarita Devi. Samba Sivrao, Segu, good evening, and Himanshu Singh, good evening, Ashwini, good evening. Yes, so everything is fine, right? And if you haven't joined me yet on my Telegram channel, you can uh, do that as well. And just give me a sec, there is some important phone call coming. Hello, Hanji, Hanji, Hanji. There's something little urgent come up, so just give me 1 minute. Just let me do a text and then we can continue with the. Just a sec. Just give me 1 sec, guys. Okay. So we're good to go. So if you haven't joined me yet on the Telegram channel, you can do that, and I'll be sharing the remaining PDFs on this particular Telegram channel, right? Sir, I haven't received brand ambassador PDF on Telegram. I am yet to compile it because the last session that I took was having well only limited brand ambassadors. So today and tomorrow being a weekend, so I'm going to complete this PDF on abbreviations also. I am going to compile almost 60 to 70 top abbreviations. This is the target, and similarly, almost 40 brand ambassadors. So I'm going to compile a list. That's going to take another day or so, and hopefully by tomorrow evening, you will be getting PDFs for both, for the abbreviations for both marketing and digital marketing as well as the brand ambassadors. So don't worry, I'm going to do a compilation of those. जो सेशन मैंने YouTube पे लिया उसमें बहुत लिमिटेड ही कवर हो पाया था, तो उसको मैं ऐड करके काफी इलाबोरेट करके ही डालूंगा. So that should be helpful, right? आगे
श्योर सर, टेक योर टाइम, ठीक है। एसबीआई एसओ मार्केटिंग में नेगेटिव मार्किंग है, यस। वंदना जी, यस, एसओ में किसी भी बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग शुड बी देयर। जनरली द रूल ऑफ थंब इज के अगर एक नंबर आपको मिल रहा है सही आंसर देने का, तो 1/4 नंबर आपका कट जाएगा एक गलत आंसर देने का। चलिए, so let us get started. So here is the first slide and a first set of some abbreviations. सबसे पहले शुरू करते हैं AIDA से। तो ये एक एब्रीविएशन है जो एक अप्रोच को दर्शाता है, जिसमें AIDA 4 लेटर्स, अटेंशन या अवेयरनेस जो है पहला ए, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद डिजायर और एक्शन। तो जब हम कोई मार्केटिंग कैंपेन करते हैं तो हम AIDA अप्रोच या थ्योरी को यूज करते हैं टू गेट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, develop the interest for the product or the service that we are trying to market, and then kindle the desire for that particular product or service, and after that we are expecting action from the customer or the consumer so that he or she would be making a purchase. अब ये पुराना थ्योरी था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑफ लेट रिसेंटली इस AIDA थ्योरी में ना एक आखिरी लेटर जुड़ गया है एस का, जो कि है satisfaction ka. So it's not only attention, interest, desire, and action. Once the product has been bought by the consumer through the AIDA model, the last thing is satisfaction, because the marketing thought says that you can only retain a customer only when he or she is satisfied. तो satisfaction भी जब जुड़ गया है, तो AIDASI तो आपको ये लगाना है, जहां पर attention और awareness interchangeably आप यूज कर सकते हैं। तो अगर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन और सेटिस्फैक्शन की जगह अवेयरनेस भी आता है तो आप इसको पिक कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। सेम विद AIDA। अब आता है अगला एब्रीविएशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, एंड marketing companies, banks, or any company that is dependent on the customers, which obviously is every company today, is spending heavily on CRM. So the full form of CRM is the customer relationship management. Now it is a set of these software programs that lets companies keep track of everything they do with their existing and potential customers. Now why are we talking it to be a set of software programs? तो जरूरी नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही प्रोग्राम हो जिसमें सारा CRM होता हो। इट कुड बी अ डिफरेंट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो अगर कस्टमर केयर है तो उनके पास एक कस्टमर के केयर के लिए एक अलग तरीके का CRM होगा, और वहीं पर अगर दे वी हैव अ सेल्स टीम और वी हैव अ मार्केटिंग टीम, दे माइट बी हैविंग अ डिफरेंट CRM software looking at different parameters, right? The idea is to give a customer a good experience throughout his lifetime with the company, and you should be able to maintain a healthy relationship with the customer. इसमें कस्टमर का परचेज हिस्ट्री, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, जो भी कुछ उसके पास्ट ट्रांजैक्शंस हैं, जनरली वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, सो दैट बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा एंड द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर विद द कंपनी और द प्रोडक्ट्स, यू कैन डिजाइन और यू कैन प्रोबेबली act accordingly in future. Now this is a very important term which is CMO, which is the Chief Marketing Officer. अब ये क्या होता है? This is the topmost job in the marketing organization structure. नाउ अभी से कुछ समय पहले तक CMO पोजीशंस उतने नहीं होते थे, बट अब ऑफ लेट, बिकॉज लॉट ऑफ companies are relying heavily on the marketing aspect of the company, especially when you are a new company, you want to develop a customer base, you want to reach out to a lot of people, you want to increase the brand awareness, so you need a person who's dedicated for marketing purposes. So to focus on the marketing activities of a company, आप उस वर्टिकल को तो अलग करते ही हो, उस वर्टिकल को हेड करने के लिए भी आप एक व्यक्ति जो है अलग से डेजिग्नेट करते हो, दैट ही और शी would be responsible for the company's or the organization's entire marketing activities. So he or she would be the whole soul, the only person responsible for the company's entire marketing objectives and the entire marketing effort. तो जितने भी मार्केटिंग की चीजें होंगी वो सब इंटर्न उस बंदे को रिपोर्ट करेंगे, जो कि होगा CMO. Generally, the chief marketing officer reports into the CEO of the company, right? Now, this is another important abbreviation, KPI. Now, the full form of KPI is Key Performance Indicator. अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा। पहले मैं समझा देता हूं द मीनिंग ऑफ दिस एब्रीविएशन, और फिर मैं आपको इसका रेलेवेंस भी बताऊंगा, स्पेसिफिकली इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री, राइट। A type of performance measurement companies use to evaluate an activity's success. अब जैसे मान लीजिए a new bank like an IDFC bank is there.
So let us take compare two banks. Let us take a private bank, an IDFC First Bank, which is a pretty new bank, hardly a couple of years old in the industry. And then we have the industry stalwarts and the biggest of the private sector banks like say ICICI Bank. अब IDFC बैंक जो है एक नया बैंक है, तो इसके लिए जो अभी इस समय from the business perspective is important to gain the market share, is to gain more customers, is to satisfy these customers. Whereas for ICICI बैंक यहाँ पर चैलेंज होगा कि भाई हम NPS को कम कर लें, हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बॉटम लाइन को इम्प्रूव कर लें, इस तरीके की बात होगी, राइट? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिपेंडिंग ऑन व्हाट सेक्शन दे आर वर्किंग फॉर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट का भी केपीआई अलग अलग हो सकता है, हर एक पर्सन का जो एक अलग जॉब रोल प्ले कर रहा है कंपनी में, उसके लिए भी अलग अलग केपीआई हो सकते हैं, राइट? हमारे टाइम पे व्हेन आई वाज हेडिंग द क्रेडिट फंक्शन ऑफ द बैंक, तो हमारे केपीआईज अलग होते थे फ्रॉम दोज हु वर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो क्रूशल है हमारे लिए जज करने के लिए कि हमने कोई अगर एक्टिविटी किया टुवर्ड्स दिस, तो वो कितना सक्सेसफुल हुआ। Suppose when you'll become a marketing officer in a bank, right? And you join a big branch, maybe in a metro city like Mumbai, and you are the marketing officer for that particular bank's branch. So one of your roles and responsibilities would be to increase the customer base. Would be to get say n number of HNI, high net worth individual customers on board of the banking system. Would also be to open up n number of accounts and savings account and current account, or maybe doing some cross sell. तो आपके लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या-क्या हो सकते हैं कि आपने कितने कस्टमर्स ऐड करे, कितने एचएनआई कस्टमर्स आपने जोड़े, आपने विद इन अ स्पैन ऑफ से 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आपने क्या-क्या एक्टिविटीज करे, तो ये आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, जो ये आपको हेल्प करने में आपको समझने में हेल्प करेंगे कि आपने कितना इफेक्टिवली अपने एक्टिविटीज को करा। एंड बेस्ड ऑन दोज केपीआईज आगे के बेंचमार्क्स हमारे सेट होंगे, राइट? अप्रेजल आपने एक वर्ड सुना होगा कि जब कोई एम्प्लॉय काम करता है और साल में 2 बार या साल में 1 बार ही उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो केपीआई के अराउंड ही होता है। हमने आपको ये काम करने को दिया, आपने कितना इफेक्टिवली ये करा, इस तरीके से। देन कम्स पीआर, पब्लिक रिलेशंस। पीआर is all about getting a company in front of the right audiences at the right time with messages that make its spokespeople sound like human beings and not robots. तो कई बारी companies have to revamp their images. Companies are also supposed to focus on how people perceive their company or the brands or the products or services. तो वहां पर they focus on public relations. अब आप देखो आज का ही काम देख लीजिए। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया नेशन का, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है, राइट? और अभी सारे न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले व्हाइल आई वाज हैविंग माय टी आई सॉ सारे न्यूज़ चैनल्स वर कवरिंग कि किस तरीके से वैक्सीन का एक्सेप्टेंस हो रहा है हॉस्पिटल्स में। भाई हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जा रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स टू एंश्योर। और फिर उनका इंटरव्यू ले रहा है मीडिया कि भाई आपको क्या लगता है वैक्सीन से, वर यू हैप्पी और इज देयर एन एंजाइटी एंड पोस्ट वैक्सीनेशन व्हाट इज योर फीडबैक? व्हाई? बिकॉज इस एक तरीके का पीआर एक्टिविटी डेवलप हो रहा है टुवर्ड्स दिस वैक्सीन, ताकि लोगों का जो डर है ना वो इस वैक्सीन से खत्म हो जाए। तो इस तरीके से पीआर एक्टिविटीज बैंक्स भी करते हैं, राइट? तो पीआर एक्टिविटी का ही पार्ट है कि भाई आईडीएफसी बैंक हैज टेकन मिस्टर अमिताभ बच्चन ऑन बोर्ड, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर ले लेंगे जिससे कि मैसेज जो है पॉजिटिव जाए। लेट्स कम ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब एक आता है क्यूआर कोड। इफ यू हैव मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन यू गो आउट फॉर शॉपिंग और आपको एक पेटीएम या गूगल पे या पेयू में आपको अगर पेमेंट करना है, तो आपको एक कोड स्कैन करना होता है। तो पहले तो एक तो प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड लगा होता है जो लाइंस का होता है, लेकिन अब जो है एक स्क्वायरिश ग्रिड होता है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वायर्स आप देखते हो। तो उस तरीके के कोड को वी से इट इज अ क्यूआर कोड। इट इज बेसिकली अ क्विक रिस्पॉन्स बारकोड। नाउ इट इज एन एडवांस्ड बारकोड which holds more information than a normal barcode. Now these are the scannable barcodes used by marketeers to bridge offline and online marketing. आपने कई बार देखा होगा कि व्हेन यू परचेज अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, सो ऑन एन एडवर्टाइजमेंट देयर इज अ स्मॉल बारकोड। उस पे लिखा होता है टू नो मोर स्कैन द कोड। आप एक कोड को स्कैन करोगे तो हम आपको एक लिंक पर ले जाएंगे जहां पे आप इस चीज या इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, राइट?
सो द आइडिया ऑफ द बार कोड इज कि भैया ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन जा सके और जो गैप है ऑफलाइन ऑनलाइन का वो ब्रिज हो सके. सो व्हेन पीपल सी देम दे कैन टेक आउट their smartphone and scan the QR code using the QR barcode scanner app. See, now this is a very important term, SaaS. Or throughout the lockdown, people have utilized these SaaS a lot. Now, the full form for SaaS is software as a service. Now, any software that is hosted by another company which stores your information in the cloud will be called as a software as a service. So when you use the Google Suite में आपका Google Meets आ गया, Google Drive आ गया, Google Sheets आ गया, Google Docs आ गया. In fact, the Zoom app, which almost everybody of us has used during the lockdown. In fact, the much controversial WhatsApp these days, this is also software as a service. Many businesses use WhatsApp as a software as a service. अपने क्लाइंट से टच में रहने के लिए ग्रुप्स बनाने में तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट? नाउ व्हाट इज डीएम? डीएम इज डायरेक्ट मार्केटिंग. ये हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. Then the last abbreviation from the marketing bunch today is the word of mouth. So word of mouth is the passing of information from person to person. Technically, the term refers to oral communication, but today it refers to online communication as well. सो इफ यू हैपन टू यूज माय सर्विसेज और आपने अगर मुझसे ऑनलाइन पढ़ाई करी एंड सम ऑफ योर कलीग सेज हे बडी आई हैव आल्सो फिल्ड द फॉर्म फॉर एसबीआई एसओ मार्केटिंग, whom would you recommend to help me get more insights into marketing skills? आप बोलोगे ने I took a class from Juneja sir and he's a good person, he teaches very well, so you can go and follow him as well. तो आपने क्या करा? You have generated a positive word of mouth for me on the social media or on telephone or all any of the communication channels for that matter, right? तो पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे को जाके खुद पर्सन टू पर्सन बताते थे, लेकिन अब बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज कम इनटू पिक्चर, तो अगर आप किसी को डिजिटली या ओवर ऑनलाइन कम्युनिकेशन मोड में भी आप किसी को रिकमेंड करते हो, so that will again be considered as word of mouth. This is amongst the most effective marketing campaigns or the things that you can have. It works wonders if you can generate a positive word of mouth for your products or your services or your brand. Nothing like that. आपने कभी भी किसी भी एप्पल आईफोन यूजर को ये कहते हुए नहीं बोला होगा कि मेरा आईफोन खराब है, तुम्हारा आईफोन बेटर है, मेरा आईफोन उससे अच्छा नहीं है. वो भले ही इस बात को लेकर जरूर नाराज हो कि मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, but generally the experience of iPhone users, they will be in general be very happy, and this positive word of mouth generated for a particular brand basically helps them to generate more business. Now, in the next two slides, we're going to take up some important digital marketing abbreviations. So stay in touch. And again, this is the link to my Telegram channel. And also, if you haven't gone through the crash course, अभी क्रैश कोर्स क्यों? एक कोर्स तो मेरा है ही जो पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स है, बट अगर आप एसबीआई एसओ या आईबीपीएस एसओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए पूरे के पूरे वीडियो कोर्स को एक्सेस करना है, तो मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया है जो कि 19th ऑफ जनवरी तक ही अवेलेबल होगा. और जो दूसरा वीडियो कोर्स है जो कि कंप्लीट वीडियो कोर्स है वो तो अवेलेबल है ही और आगे भी होगा, बट ये केवल 1 मंथ का वैलिडिटी वाला जो क्रैश कोर्स है आप परचेज कर सकते हैं 19th ऑफ जनवरी तक. जब आप इसको परचेज कर लेंगे तो आपको पूरे 1 महीने का एक्सेस मिलेगा मेरे सारे के सारे कंप्लीट वीडियो कोर्स का. इसमें 35+ आवर्स का वीडियो लेक्चर्स है इन इंग्लिश लैंग्वेज, which will also cover marketing awareness, MCQs with their explanation and solutions. So link for this crash course is given below in the description. The price is 1299, but once you use the code, you can get it for rupees 976 only. This is a very effective tool in case you're running short of time. और आपको कम समय में अगर आपको सारा का सारा मार्केटिंग स्किल्स along with marketing awareness कवर करना है, तो 6 से 7 दिन में आप आसानी से इस पूरे के पूरे कोर्स को खत्म कर सकते हैं और आपको काफी बेनिफिट मिलेगा. चलिए, अब आते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एब्रीविएशंस को लेकर. तो बी आर को बोलते हैं बाउंस रेट. जनरली जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं और हम मार्केटिंग कैंपेन का बात करते हैं, तो बाउंस रेट जनरली दो डोमेन्स में हम ज्यादा यूज करते हैं. एक तो वेबसाइट बाउंस रेट और दूसरा ईमेल बाउंस रेट. तो जैसे चेक बाउंस होता है आपके लैंग्वेज में, किसी ने चेक लगाया वो क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया. सिमिलरली देयर इज अ बाउंस रेट.
तो इसका मतलब क्या है? द वेबसाइट बाउंस रेट मीन्स द परसेंटेज ऑफ पीपल who land on a page on a website and then leave without clicking on anything else or navigating to the other pages of your site. तो आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन रन किया और आपने अपने वेब पेज पे किसी बंदे को बुला लिया, वो आपके वेब पेज पे गया लेकिन कुछ भी एक्शन किए बगैर उसने वो जो है उसको बंद कर दिया। तो हुआ क्या, बंदा आपके वेबसाइट पे गया भी बट उसने आगे जाके कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो हम बोलेंगे बाउंस हो गया। तो अगर आपका कैंपेन इफेक्टिव है तो बाउंस रेट होना चाहिए कम, और अगर आपका मार्केटिंग कैंपेन या आपका जो भी आपने इस तरीके से अप्रोच बनाया है, इफ इट डजंट वर्क वेल, सो यू कैन सी दैट द बाउंस रेट इज हाई। Similarly, when you talk about email marketing, so we also do consider email bounce rate. It is the rate at which an email was unable to be delivered to a recipient's inbox. सपोज आपने 100 ईमेल्स शूट करे, जिसमें से जो है 80 ईमेल्स डिलीवर हो गए और 20 ईमेल्स डिलीवर नहीं हो पाए, तो आपका जो बाउंस रेट है वो क्या बनेगा? 20%, विच मीन्स 20% ऑफ योर ईमेल्स आर नॉट रीचिंग टू द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स। तो ये बाउंस रेट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि आपका ईमेल का जो मेलिंग लिस्ट है दैट इज नॉट अपडेटेड एंड दैट नीड्स टू बी अपडेटेड, राइट? यस कार्तिक, पूरे के पूरे चांसेस हैं, तभी मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि ऑल दोज हु आर अपियरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स शुड first consider this examination because of two reasons. Number one, that the number of vacancies might increase, so the ratio of the candidates available for the mains examination upon the vacancies is healthiest. And number two, that the examination is on 24th, you'll still get some time to prepare for the upcoming RRB and IBPS SO, IBPS PO examinations, right? Now, this is another important term, that is CRO. अभी ये CRO क्या है? CRO is conversion rate optimization. अब ये क्या कहानी है? Let me explain it to you. उसके बाद डिटेल में समझेंगे. The process of improving your site conversion using design techniques, key optimization principles and testing. तो कई बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, यू फेल टू फिगर आउट कि कौन सी चीज कहाँ पर है, क्या क्लिक करो क्या क्लिक नहीं करो, बिकॉज द पुअर वेबसाइट डिजाइन। तो कई बार हम डिजाइन को फाइन ट्यून करते हैं, उस वेबसाइट में नेविगेशन को इम्प्रूव करते हैं ताकि इंटायर यूजर एक्सपीरियंस कम्स अप वेल, सो दैट द कन्वर्जन रेट इम्प्रूव्स। तो जब हम इस तरीके के एक्टिविटीज करते हैं तो आर फोकस इज ऑन दी ऑप्टिमाइजिंग ऑफ द कन्वर्जन रेट। सपोज पहले अगर मैं 100 कंज्यूमर्स मेरे अगर वेबसाइट पे जाते हैं और केवल 5 परचेजेस होते हैं, लेकिन अभी अगर मैं 100 कंज्यूमर्स को या 100 क्लाइंट्स को या 100 प्रोस्पेक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे भेजता हूं और अगर 15 कन्वर्जन्स हो जाएं, तो मैं बोलूंगा कि मैंने ना अपना ऑप्टिमाइजेशन बेटर कर लिया और इंप्रूव कर लिया ओवर द प्रीवियस। Now, then there is a term called CTA, that which is the full form for call to, which is the abbreviation for call to action. Now, a link, a text link, a button, image, or some other type of web link that encourages a website visitor to take an action on that website, such as visiting a landing page or downloading a piece of content, that will be call to action. तो अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, register now, buy now, subscribe now, check the details, no more, download here. Okay, your feedback, anything that demands your action. It could be a link, it could be a button, it could be an image. और जब हम फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ये वाला गेम खेल के देखो, ये वाला क्विज लेके देखो, तो वो सारे के सारे कॉल टू एक्शन ही है, बिकॉज ईच एंड एवरी लिंक is desiring for you to do some action on it, right? What should be the strategy for SBI SO exam? Varun Sati, what my input is that SBI SO examination में आपका रीजनिंग और क्वांट्स बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट आपको एज बहुत मिलेगा वहां पर, और आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज द कंपटीशन वोंट बी दैट मच एज इन अ नॉर्मल IBPS PO एग्जामिनेशन और द IBPS SO एग्जामिनेशन। प्लस इस तरीके के आप वीडियोस का भी हेल्प ले सकते हैं, और मैंने दो कोर्स बनाए हैं। एक तो मैंने मार्केटिंग स्किल्स का कंप्लीट वीडियो कोर्स बनाया है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया, और दूसरा आई हैव आल्सो डिजाइंड अ कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन कोर्स, वो भी आप ले सकते हैं। आइडिया है कि आप थोड़ा बहुत ब्रश अप करके जाएं, और अगर आप डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, बिकॉज एक तो कंपटीशन बहुत कम है और बहुत कम लोग
प्रॉपरली पढ़ के एग्जाम लिखते हैं, राइट? सो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है एसबीआई एसओ के लिए, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। वहां पे मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया है सारा का सारा सिलेबस एंड एवरीथिंग, राइट? एसओ मेंस में कार्तिक सेफ अटेम्प्ट इज अ टफ टास्क टू टेल। 60 में से आई वुड सजेस्ट कि आप 50 प्लस विद अ वेरी हाई एक्यूरेसी करिए। सो योर टारगेट इज टू अटेम्प्ट 50 प्लस क्वेश्चंस। It is a Herculean task, but with high accuracy of 90+% accuracy. This is what I would ideally suggest. But then a lot depends on the difficulty of the examination and the kind of questions that they have. So we'll have to wait and watch. अभी अभी जब हमने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, तो मेरा इनपुट होगा कि 90+% एक्यूरेसी एंड 50+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो सेफ स्कोर कहलाएगा, राइट? बिल्कुल वो भी है। आप नीचे लिंक में क्लिक करें तो आपको एक स्कोर बूस्टर 6 मंथ्स का टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा सर। ठीक है, चलिए जी कुछ और टर्म्स देखते हैं ना। दीज आर दी फ्यू मोर टर्म्स। सीटीओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। अब नाउ दिस इज द एब्रीविएशन फॉर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। Now, Chief Technology Officer is the executive in charge of an organization's technological needs as well as its research and development. Now, a few years ago, CTO का कोई रोल या कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा यूज होती नहीं थी एंड द कंपनीज वर नॉट दैट हेविली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और जैसा कि आप देख रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स आर अराउंड टेक्नोलॉजी। So CTO plays a major role in today's world to take your company ahead by miles, so that it is beyond the competition and it actually helps you. Banks spend heavily on technology these days, why? Because एक तो कैशलेस बैंकिंग हो गया, उसके बाद नहीं, स्कोर बूस्टर इंक्लूडेड नहीं है दोस्त, आपको अलग से ही जाना पड़ेगा। बट यू कैन यूज द कोड स्टे होम, आपको 199 रुपीज में सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, विच विल बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स। तो अगर आप आईबीपीएस एसओ के बाद आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ कर रहे हो, तो वो भी सारे के सारे एग्जाम्स आपके कवर होंगे। सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। So I was telling you about the CTO's role. So generally a CTO is a person who is responsible for the entire technology. तो जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, तो उसमें इंटरफेस क्या होगा, सेफ्टी क्या होगा, वेबसाइट का ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, वेबसाइट का डिजाइन क्या होगा, क्या सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, किस किस तरीके से क्या क्या होगा, एवरीथिंग बेसिकली comes up to technology, and CTO is the person who's responsible for that. In fact, कोई बैंक अगर कोई नया इनोवेशन करता है, जैसे कि आजकल बहुत सारे बैंक चैटबॉट्स लेके आ रहे हैं, एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज को एड्रेस करता है कंज्यूमर्स के या कस्टमर्स के वेबसाइट पे, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं एक सीटीओ के होते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज होती हैं, जो बहुत टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंपनीज होती हैं, जनरली वो अब एक डेडिकेटेड सीटीओ रखने लगे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सो एज टू कीप अ फोकस। इसका एक रीजन और भी है, बिकॉज साइबर क्राइम एंड साइबर थ्रेट्स आर इंक्रीजिंग डे इन डे आउट। सो द आइडिया इज टू हैव अ सीटीओ हु कैन फोकस ऑन दैट एज वेल, राइट? थैंक यू सो मच अत्रिदास, एंड थैंक यू सो वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं। देन देयर कम्स द सीएमएस। अब आप देखो कि मैंने आपको बोला बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ब्लॉग्स लिखते हैं, वेबसाइट्स पे भी जाते हैं, उनका मोबाइल फोन में ऐप भी होता है, काफी सारी चीजें होती हैं जो कंज्यूमर कनेक्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द ऐप और थ्रू एनी अदर इंटरफेस। तो वहां पर कंटेंट क्या रहेगा? So that is the part of the content management system. So suppose you're visiting Amazon's website, वहां पर किस तरीके का कंटेंट शो होगा, किस तरीके से हम कंटेंट को कैटेगराइज करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या मेंशन होगा, क्या क्या मेंशन नहीं होगा। सपोज आपको अगर एक मोबाइल फोन ही खरीदना है, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे वेबसाइट पे, तो ये सारा का सारा जो है will come under the content management system. A web application designed to make it easy for the non-technical users to create, एडिट एंड मैनेज अ वेबसाइट। तो अब जब Amazon का हमें पूरा का पूरा डिजाइन करना है, कौन सी चीज कहाँ लिखी जाएगी, तो उसके लिए बैकएंड पे जो बच्चा या जो भी बंदा उस चीज को मैनेज कर रहा होगा, तो टू मेक इट यूजर फ्रेंडली फॉर हिम टू अपडेट दोज थिंग्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, वी विल बी नीडिंग अ सीएमएस, अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो वेबसाइट के बैकएंड पर जो कंज्यूमर्स को दिखेगा उसको मैनेज करने के लिए, कमिंग टू दैट,
उसको मैनेज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन दे देगा जिससे कि इट बिकम्स इजी फॉर यू टू मैनेज द कंटेंट, राइट? सो दैट विल बी द सीएमएस। उसके बाद आते हैं सीओएस, दैट इज द कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम. So you are using the CMS, so you're using the content management system to optimize it to deliver customers the most personalized web experience possible. So suppose you buy a Amazon Fire Stick, Fire TV Stick. आप लग इन करते हैं तो वो जो आपको टाइल्स दिखाता है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सोनी लिव, और यहाँ पे जी ये वाला मूवी लॉन्च हुआ है, आपके लिए रिकमेंडेड मूवी ये है, ये टीवी शो है। तो सीएमएस पीछे से ये बंदा डिसाइड करता है कि क्या आएगा। बेस्ड ऑन योर यूजर एक्सपीरियंस हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि किसको क्या दिखाना है। सो इफ आई लॉग इन टू माई Amazon वेब पेज, and if you log into your Amazon web page or your Facebook page, or if I log into my Facebook home page website, हम दोनों के Facebook के पेजेस पे, हम दोनों के Amazon के लैंडिंग पेज पर अलग अलग कंटेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमाइज किया गया एक सॉफ्टवेयर के जरिए, ताकि हमको वही दिखे जो हमारे इंटरेस्ट का हो, जो हमारे लिए रेलेवेंट हो, जिससे कि कंपनी को सेल करने के चांसेस ज्यादा मिले, राइट? And the last term that we'll be discussing today would be CPA, that will be cost per action. मैंने अभी आपको बताया था ये वाला टर्म, कॉल टू एक्शन। तो यहाँ पर हम लिंक या बटन या इमेज ले रहे हैं जहां से कोई एक्शन कस्टमर के थ्रू आए। सीपीए क्या करता है? इट्स एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल वेयर द एडवर्टाइजर्स पे फॉर ईच स्पेसिफाइड एक्शन दैट समवन टेक्स, लाइक एन इंप्रेशन, क्लिक और सबमिट और सेल्स। तो अगर मेरे को एडवर्टाइज करना है अपना ब्रांड, आई वांट पीपल टू नो अबाउट जेसी एकेडमी, and I want to run a marketing campaign online with the help of Google. तो गूगल बोलेगा ठीक है भैया, मैं तुम्हारा एड यूट्यूब पे भी चला दूंगा, आई पुट योर एड ऑन गूगल पेज ऑल्सो, आई पुट योर एड ऑन मल्टीपल प्लेसेस, मैं अपने प्ले स्टोर पे भी लगा दूंगा, तो आप मेरे को पैसा क्या दोगे? ठीक है ना? तो मैं उसको बताऊंगा कि भैया ऐसा है, क्लिक करे तो इतना पैसा दे दूंगा, सर्च करे तो इतना पैसा दे दूंगा, परचेस करे तो इतना पैसा दे दूंगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आई एम फिक्सिंग कॉस्ट पर एक्शन। हर एक एक्शन विच आई वांट द कस्टमर टू टेक फॉर द एडवर्टीजमेंट आई पुट इन ऑन द इंटरनेट, तो उसको लेकर हम क्या पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर एक्शन। तो अगर मैंने 100 रुपए खर्च करे और अल्टीमेटली 20 इनपुट्स मेरे को मिले फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स, तो मैं बोलूंगा कॉस्ट पर एक्शन इससे ₹5। गॉट इट? सो दैट इज द इंटायर सेशन टुडे, एंड आई कुडंट टेक इट फर्दर बिकॉज देयर इज टू हैव अ लिमिट। नहीं तो ये एंडलेस सेशन हो जाएगा। तो मंडे को व्हाट वील डू इज, मंडे को विल हैव अ session of some very important MCQs, and after that we will be continuing with the marketing awareness session number 6, which will again will be a description or in detailed explanation of these abbreviations, right? So Monday को हम लेंगे MCQs, और उसके बाद अगले सेशन जो कि वेंसडे होगा उसमें हम एब्रीविएशंस, और मैं आपको ऐसे ऐसे आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। और मेरे को आप आज का और कल का टाइम दो, मैं ये पूरा का पूरा कंपाइल करके आपके वीडियो कोर्स में जो स्टडी मटेरियल का लिंक है वहां पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है? सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, इट वेंट लिटिल लेंथियर बट देन इट वाज अ वेल नीडेड सेशन। आई होप आपको कुछ सीखने को भी मिला। In case you did, don't forget to press the like button, subscribe the channel, press the bell icon, and do share it with your friends. Don't forget to comment. ठीक है सर, योर प्रेशियस लास्ट मिनट टिप्स फॉर क्लियर मेंस। अश्वनी, जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट। एक गलती जो सारे लोग कर रहे हैं, ये मत करना कि हर जगह से कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश मत करना। हमने देखा है, आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ यू स्टूडेंट्स हु आर इन पार्ट्स ऑन, हु आर बेसिकली पार्टिसिपेंट्स इन वेरियस स्टूडेंट ग्रुप्स, टेलीग्राम पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने सारे के सारे स्टूडेंट्स में ग्रुप्स बना रखे हैं। कोई एक कुछ डेटा डालता है, सारे एकदम दौड़ पड़ते हो तुम लोग वो चीज इकट्ठा करने के लिए। गलती मत करिएगा। आप क्वालिटी कंटेंट को पढ़ो, अच्छे वेटेड कंटेंट को पढ़िए, जो हम जैसे लोगों ने, जिनको एक्सपीरियंस से बना रखा है। अगर कोई एस्पिरेंट कुछ भी तो भी लेके आ रहा है, आप उसको अपने फेस वैल्यू पर उसको मत देखिए प्लीज, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू मच। So that is the thought process, and do check out this course. And I'm gonna catch you up on Monday. Monday we're gonna take up some MCQs, and I'm gonna be there in touch with you throughout your preparation. So don't worry. और मैंने अपना टेलीग्राम लिंक आपको दिया ही है, in case you have a problem. Don't forget to call me or ping me up. Bye bye. God bless you.